to class 10 students promoted from as per the CBSE norms. As you know, our school management to conduct the classes online. In that regard, I'm beginning the online classes from today, and maybe it will be the timing I will send it to your. I'm going to teach the political science lesson 1, power sharing. This is the very first chapter in the political science class 10. What you have to do before learning, you will keep rough copy and pen so that you can note the points. Okay, let's start. Before that, I would like to remind you that yesterday I sent some content of this chapter और उसी कंटेंट को मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ. Power sharing chapter, it has been started from the story of Belgium and Sri Lanka. Belgium, as you know, it is a European country, and Sri Lanka an Asian country. First of all, we would study the story of Belgium. You can see the map of Belgium. Belgium is a small country in Europe. Belgium, यूरोप का एक बहुत छोटा सा देश है, smaller in area than the state of Haryana. Imagine, it is beyond our imagination that its area is much smaller than our state Haryana. Haryana के भी area से ये बहुत कम है. And if we talk about its bordering countries, neighboring countries, then it borders with France, the Netherlands, Germany, and Luxembourg. And if we talk about the population, it has a population of a little over 1 crore. 1 crore population. इसका जो जनसंख्या है वो लगभग 1 करोड़ पॉपुलेशन है. Ethnic composition. I sent you the ethnic composition and you will see ethnic is a word which mean a social division based on shared culture. यानी कि आप देखते हो समाज में एक प्रकार का विभाजन होता है, वो चाहे भाषा के आधार पे हो, चाहे वो रिलीजन के आधार पे हो, रीजन के आधार पे हो, उसी को उस प्रकार के डिवीजन को बोला जाता है सोशल डिवीजन एथनिक. दैट इज टर्म्ड एज एथनिक. तो बेल्जियम में जो सोशल डिवीजन है इट इज एज फॉलो. ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% lives in the Flemish region. There is two main region, Flemish and Wallonia, as you can see in the map. Flemish region में 59% रहने वाले लोग डच बोलते हैं. Another 40% people live in the Wallonia region. जो बचे हुए 40% है वो Wallonia में रहते हैं and speak French, and they speak French. That means it is very much understood that there are two main regions, Flemish and Wallonia, and there are two main languages, Dutch and French. 59% speak Dutch and 40% speak French. Then whose majority is there? The majority of Dutch speaking language is there. Remaining 1%, जो बच गए 1% of the Belgians speak German. They speak German and their localities are not defined well. They live in both of the regions. वो दोनों जगहों पे रहते हैं, Wallonia as well as Flemish. In the capital city Brussels, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है. Brussels is the capital of Belgium. 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. Very interesting fact, very contradictory fact. There is contradiction that Dutch are majority in whole country and French are majority in capital city Brussels. The minority French speaking community was relatively rich and powerful. फ्रेंच जो कि संख्या में कम है वो उनको सुविधाएं ज्यादा हैं.
यू कैन इमेजिन व्हाट हैपेंड, जो माइनॉरिटी में उसको सुविधाएं ज्यादा और जो मेजॉरिटी में उसको सुविधाएं कम, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, क्या होगा, फाइट, क्लैशेस. दिस वाज रिसेंटेड. द मीनिंग ऑफ रिसेंटेड इज आक्रोश, anger. This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. मेजॉरिटी वालों को पहले मिलना चाहिए था, जबकि मेजॉरिटी वालों को जो एजुकेशनल फैसिलिटीज, जॉब फैसिलिटीज, दे हैड गॉट इट वेरी मच लेटर. एंड दिस लेड टू टेंशन between Dutch speaking communities and French speaking communities, because French speaking communities were minority in the country but majority in only one city, that is the capital city Brussels. But Dutch speaking community were in majority in whole the country, only minority in capital city Brussels. And this tension was between 1950s and 1960s. The tension between the two communities was more acute in Brussels. Brussels में ये टेंशन बहुत सीरियस था, और सीरियस इसलिए था, एज यू नो ब्रसेल में उल्टा था. पूरे देश में डच वर इन मेजॉरिटी एंड फ्रेंच वर इन माइनॉरिटी, बट इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रसेल्स फ्रेंच वर इन मेजॉरिटी एंड डच वर इन minority. And Brussels presented a special problem. The Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. So this was the story of any of the students asked me that we were have to do it. So each and everything you have to do it, and after school reopens I will check it. Now श्रीलंका. श्रीलंका, it is our neighboring country, वो हमारा पड़ोसी देश है towards south. Let us compare this to the situation in another country. श्रीलंका is an island nation. श्रीलंका एक island nation है, means वो पानी से घिरा हुआ है. Just a few kilometers off the southern coast of तमिलनाडु, वो हमारे तमिलनाडु के coast से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है. And it has about 2 crore people, about the same as in हरियाणा. उसकी आबादी 2 करोड़ के लगभग है, और इट इज जस्ट इक्वल टू हरियाणा. यू कैन इमेजिन दैट पॉपुलेशन के मामले में हम ये कितने आगे हैं. लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका इज इन साउथ एशिया. डोंट फॉरगेट, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्स? मीन्स डिफरेंसेस. वहां पे जो मेजॉरिटी है, द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स. वहां के मेजॉरिटी कौन है? सिन्हाला स्पीकर्स, सिन्हाला भाषा बोलने वाले 74% एंड 18% सॉरी 18% आर तमिल स्पीकर्स. वहां तमिल बोलने वाले के भी 2 ग्रुप हैं. तमिल्स आर डिवाइडेड बिटवीन 2 सब ग्रुप्स, one श्रीलंकन तमिल्स एंड सेकंड इंडियन तमिल्स. श्रीलंकन तमिल्स, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, वहां के जो मूल बाशिंदे हैं, जिनके पूर्वजों का जन्म श्रीलंका में हुआ है, दे आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स एंड दे आर अबाउट 13%. एंड इंडियन तमिल्स मीन्स हुज फोरफादर्स केम फ्रॉम इंडिया, जिनके पूर्वज भारत से जाके वहां प्लांटेशन के काम के लिए गए और वहां पे बस गए, और उनके जो जनरेशन है, दे आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स. सो इट हैज बीन अंडरस्टूड दैट देयर आर 2 सब ग्रुप्स ऑफ तमिल्स, इंडियन तमिल्स and Sri Lankan Tamils. As you can see from the map is given at the end of this page. Sri Lankan Tamils are concerned in the north and east of the country. Sri Lankan Tamils कहाँ पे concerned है? North and east. Most of the Sinhala speaking people are Buddhist. और वहाँ पे जो सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग हैं, what is their religion? They follow Buddhism. They are Buddhist, but Tamils are Hindus, Muslims, Christians. Most of the Sinhala speaking people are Buddhist, while most of the Tamils are Hindus or Muslims. There are about 7% Christians. 7% Christians है, उसमें कुछ Sinhalese भी हैं और कुछ Tamilians भी हैं, who are both Tamil and Sinhala. Just imagine
व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस, क्या हो सकता है दोनों सिचुएशन में? बेल्जियम में क्या हो सकता है, श्रीलंका में क्या हो सकता है? आप इमेजिन करके देखो, बेल्जियम में जो मेजॉरिटी वाले होंगे दे विल इम्पोज देयर विल ऑन फ्रेंच, डच वाले फ्रेंच को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेंगे। एंड इन श्रीलंका द सिनालिस विल इम्पोज देयर विल्स ऑन तमिल्स, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मजबूत होते हैं वो कमजोर को दबाना चाहेंगे। तो वी विल सी दिस पैराग्राफ, जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशंस लाइक दिस। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमरिक मेजॉरिटी, वो अपनी न्यूमरिक मेजॉरिटी का फायदा उठाएगा एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच, और फ्रेंच लोगों पर अपनी इच्छाओं को थोपता है, एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन और जर्मन वालों पे। दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमॉन्ग कम्युनिटीज फर्दर, एंड व्हाट विल हैपन, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई झगड़े होने की भावना बढ़ जाएगी। एंड दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, हो सकता है कि देश भाषा के आधार पे डच और फ्रेंच अलग अलग बढ़ जाए। एंड बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसेल्स, और दोनों तरफ के लोग ब्रसेल को अपनी राजधानी क्लेम करने लगेंगे। डच विल से दैट ब्रसेल्स इज आवर कैपिटल, फ्रेंच विल सेज दैट ब्रसेल्स इज आवर कैपिटल। इन श्रीलंका वहां पर भी वही होगा, majority will impose their will on minority. That means Sinhalese will impose their wills on Tamils. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority. और यहाँ पर तो और ज़्यादा मेजॉरिटी है, वहाँ पर तो मात्र 60-40 का रेशियो और यहाँ पे 75-25 का रेशियो है, तो और ज़्यादा ये इंजॉय करें majority and could impose its will on the entire country. Now let us look at what happened in both these countries. If you have any problem, then comments me on the PAN portal, and regarding this I will send the homework and you have to do it in the fair copy. And from tomorrow onwards पैन पोर्टल खोल के देखते रहना, उसमें जो भी नोटिफिकेशन होंगे, यदि मुझे वीडियो लाइव करना होगा तो मैं उसमें टाइमिंग बता दूंगा कि मैं इतने बजे वीडियो लाइव करूंगा, और अगर लाइव नहीं होगा अपलोडेड वीडियो होगा तो भी मैं बता दूंगा। और आपको उसके लिए यूट्यूब पर जो मेरा चैनल है वो मेरे नाम से ये रवि जॉर्ज, आप यूट्यूब पर जाके वहाँ पे रवि जॉर्ज जाके सर्च करोगे एंड मेरे फोटो के साथ वो नेम आएगा और उस पर क्लिक करोगे एंड यू विल सी द लिस्ट ऑफ videos and you will study there. Okay, thanks a lot. I will try